Honorable Governor of Odisha, Sri Raghuvar Das ji, Sarmaniya Pradosh Patnaik, President National Journalist Welfare Board Odisha, Sri Sanat Mishra, General Secretary National Journalist Welfare Board, Manchasina Shrijukta Chandrasekhar Sharma, CDM State Bank of India, Bhubaneswar, other dignitaries present here on the stage as well as off the stage. गणतंत्र सजाग प्रहरी भाई भौणी माने एवं मोर प्रिय गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद, it is such a great coincidence and my pleasure to be a part of a public function and share the dash with the Honorable Governor for the second time in a week to deliberate two very issues of the public importance. On last 10th, we celebrated the International Year of Millets, where our Honorable Governor of Odisha graced the occasion. And today we are celebrating National Press Day. Thank you, sir. Thank you very much for gracing both these occasions with grace and intellect. जातीय सांबादिक कल्याण बोर्ड भुवनेश्वर आनुकूल्य आयोजित जातीय प्रेस दिवस पालन अवसर में समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी। आज दिन गणमाध्यम एक स्वतंत्र दिवस, जातीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष नवेम्बर 16 तारिख में पालन होगा आम प्रेस गुरुत्व को सूचई था। Fortunately, India has a very rich tradition of press freedom. If we go back to the British era, we can see that the freedom movement was kept alive because of the print media, the print media. Even though news was slow to travel across the length and breadth of the country, it arrived. And when it arrived, the activities of our legendary freedom fighters caught the imagination of the nation and the people, even though we are a hatchet state at that given point of time. The British rule in India to go down the memory lane had done thousands of horrible things to India, horrendous things to our people. अत्याचार दमन उपहास करिवार कार्यक्रम करिथिले आम लोकक सहित ब्रिटिश, but they had also done a few good things which helped India to grow as a nation thereafter. One such rare and maybe unintended deed was to allow the culture of free press even during the height of British era, or you can call a semi-free press at that given point of time, if you want to call it that way. आमे समस्त जानचु भारत वर्षर प्रथम संवाद पत्र जेम्स अगस्टस हिके द्वारा आरंभ करा जाइथिबा हिकेस बेंगल गैजेटियर, बेंगल गैजेट रूप 1780 मसीह ये आम जनजीवन को लिपिबद्ध करुथिला। परवर्ती काल रे बेंगल गैजेट भावरे नामित हैला। What is interesting is that he kept writing on various anti-people policies and corruption in governance till 1807. मन रख 1780 मसीह बेंगल गैजेट आरंभ हैला, and that too by a British man, and a British man who dissected the then government's deeds. गरीब लोगों को विरुद्ध कौन करुच्ची एवं करप्शन को जगह होची ताकू जदि से काल रे किए लोकलोचन आनुला सी गणे ब्रिटिश अगेंस्ट करथिला। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट in 1807 it was seized
and later banned by the British government माने ब्रिटिश लोक बेंगल गैजेट लिखिला द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार वितस्पुर हेली बैन कला एवं ब्रिटिश से जे सांबादिक से थिले जेम्स अगस्टस हिके was also arrested. This is the dichotomy. If you go through the history of India's freedom movement, several daily, weekly, monthly newspapers and journals kept on appearing. Gandhiji ran 4 publications. Gandhiji निजे जन सांबादिक थिले. बाल गंगाधर तिलक ran 2 numbers. से बड़े बहुत सांबादिक माने फ्रीडम फाइटर्स वर सांबादिक and Sambadika as freedom fighters, both rolled into one. They were the role models in those days. Many other prominent freedom fighters also ran several popular publications. How can we forget our own Utkal Deepika? ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କାଇଭ୍କୁ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପଛରେ ନଥିଲୁ ଆମେ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା what is interesting in that most of these publications are backed by various acts like Vernacular Press Act enunciated by Britishers, Censorship of Press Act 1799 by the Britishers, Medical Pay Act and Indian Press Act of 1910, while the media outlets were regulated by the Licensing Regulation of 1823, Licensing Act of 1857 and Registration Act of 1867. During that period, government allowed a journalist or media house to cover any story and bring it to the audiences without impacting sovereignty of the British India in the subcontinent. In fact, they brought the concept of self-censorship. British बहुत अत्याचार करची, बहुत खराब काम करची, बहुत आमको अत्याचार करची, किंतु केते गुडी जिंस छाड़ी नहीं जाईची जार लिगेसी मध्ये आज पर्यंत आम उपलब्धि करूछु। किंतु यार माने नुहे जे सेमाने संथकमा बाबाजी थे। अनेक समय सरकार विरोधी लेखा संवाद पत्र तथा संपादकों उपर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करते ब्रिटिश। एपरिक महात्मा गांधी दुई थर सेडिशन एक्ट शिकार होते लेखनी लेखनी मुंडर से जो लिखिते से गिरफ जेल दंड दि जाता। मोर कहवार तात्पर्य हो एक स्वाधीन स्वतंत्र गणमाध्यम परंपरा ए देश में बहु दिन चली आसी। स्वाधीनता परवर्ती परिस्थिति में आहरी दृढ़ और वृद्धिमंत हो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नॉट फाइंड द टर्म प्रेस फ्रीडम। कौन सी जगह रे प्रेस फ्रीडम बोली कौन सी शब्द ये भाव में ना, कौन सी जगह रे ना। इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) द फंडामेंटल राइट्स व्हिच रीड्स all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. Press freedom is a part of this broad fundamental right. Of course, unlike many Western countries, this freedom is not absolute and subjective, and this is subjected to reasonable restrictions. जोटा हमर विभिन्न प्रोनाउंसमेंट रे आसी। Now this phrase reasonable restrictions सेटा केते दूर जाके जीवो। when you apply the letter of the law, it should, are you applying it equitable to everybody or not? That is a $1 million question now. Now this phrase is a tricky phrase also. Who will decide what these restrictions and when the freedom is excessive and needs to be curbed? এটা বর্তমান মধ্যে চলছে সেই সিনারিও। that dichotomy prevails in the country now. We remember regarding the bumpy ride we had during the height of emergency way back in 70s, the dark days of emergency era. But then Indian press again bounced back. Indian press सेतबेले जेतबेले कोनोसी सांबादिक किंवा कोनोसी भाई मानकर पॉलिटिकल
भाई माने जिते उभान हो जाते जेल को जाते से समाज प्रेस बाहर जे अमुक लोकटी आगामी दिन में ताकर सब प्रोग्राम कैंसल होगला अमुक लोकर सब कार्यक्रम बातिल है आम तारी जड़ू जापारू जे अमुक लोकटी धराला से निशार आरेस्टेड हो से जेल दंड भोगापी गला यहीटा माने सीधा सड़क न कहले ए बाटर प्रेस तार दायित्व तुलाऊला जहाँ आज माने मन पड़े इंडियन प्रेस फॉट बैक एंड गॉट बैक द फ्रीडम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट जर्नलिस्ट्स who had asked the government of the day very tough questions गोटे गोटे सांबादिक गोटे गोटे लेखा प्रजातंत्र कि समाज में लिखिदे झिटिपिटी कहे कि गाँ मजलिस रे सरकार थरहर होता से भारत वर्ष सब जगह देखा जाऊला आम यंग डेज रे आम देखीचु किंतु किछि वर्ष पर आस्ते 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 चेंज आड़ को आसला मु गत किछि वर्ष गणमाध्यम प्रवाह धारा देखिले मोर मन किसी प्रश्न उठि पारुछि आपण पाखे मन कथा कहूँ आपण भल पाई पारत न पाई पारत गत वर्ष आज दिन में मुझे एक प्रेस नेशनल प्रेस डे रे डकाही जो मैंने डाकी से अच्छा मंच तले अच्छा मंच उपर जड़े दिज अच्छा से भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देश भितर जहाँ गणित हुए आम आमर नंबर था 150 चलित वर्ष से नंबरटा कमिकी 161 को पड़े ये जो 11टा पाहाच आम तलू जाइचु बुड़ीगला गोड़ तलू तलू से आम दुख प्रकाश करूँ कि विव्रत हबू निज मन को पचारि नवा दरकार यह आम आम गणमाध्यम निश्चित भाव गौरवर विषय नुहे I also want to ignore the ranking like many who say why should we believe a certificate by a foreign agency. Absolutely right, you may be right, it's a relative term, we should not, but when I look around and scan the newspapers and watch the TV screens I am little concerned. जिते टेलीविजन गुड़ी को आम देखुचु प्राइम टाइम कार्यक्रम देखुचु से आई एम रियली कनसर्न जिते गोटे राज्य रे जड़े युव सांबादिक को अरेस्ट करा जाए एथिपाई से कहीं अरेस्टेड हेले ना कौन पाई से प्रदर्शित कले जे अंगनवाड़ी केंद्र रे छोट छोट पिला माने रुटी सहित लुण खाऊ से देखाला एवं गोटे राज्य में से जेल को गले जिते जड़े दुष्कर्म पीड़िता एवं सरकार का स्थानीयता रिपोर्ट करने को जाऊँ दुई जन सांबादिक से राज्य में जाए बुलिले से अरेस्टेड करागला कौ एक्ट यूएपीए कथा आपण मैंने समस्ते जानते आतंकवादी हिसाब से आख्या दि जाए गिरफ करागला जितेबाला मुझे देखे मु विव्रत हो पड़े भारतीय साहसी सांबादिक माने यूक्रेन और गाजा युद्धर लाइव कवरेज करने चली चली जाती किंतु ए देशर एक भाग जोटा मणिपुर जोटा जलुची से आखि बंद कर जितेबाला मुझे देखे युव लोक गायिका को पुलिस नोटिस देछि कहीं तमें एभली गीत लिखिल जिते से पचारती जे बुलडोजर जिते झील माँ उपर कहीं चढ़े दिगला से विषय से गीत लिखि से प्रश्न उठा स्वाभाविक प्रेस फ्रीडम गति कुआड़े ब्रिटिश समय कौन था आम अमल कौन अच्छी आहरी परितापर विषय आज जे सोसाइटी रे तो डिवाइडेड हो सारी मीडिया क्लान आपण मैंने समस्ते बसी जो मैंने यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट आपण मैंने भी डिवाइडेड आज एमती परिस्थिति सृष्टि होती जिते किसी सांबादिक को अरेस्ट करा जाउछि किंबा विभिन्न
आलर ताको हारासमेंट करा जाउची आउ एक गणमाध्यम गोष्ठी ताको सेलिब्रेट करूछथि या असत्य नहीं ताको देखुची आपण मन जो मन पचारि पारथि आज आम एपरिक विचित्र परिस्थिति दे गति करूछु जहाँ आगुरी नथिला मत व्यक्तिगत भाव में बहुत आघात नहीं था जो मुझे शुणे आज सांबादिक वर्ग को दरबारी कविर आख्या दि जाऊँगी दुखर कथा जे अल्प किसी मीडिया कर्मी सांबादिकता पर एक महान और पवित्र प्रोफेशन को आज भिन्न एक दृष्टि देखा सो आम आज जो एकाठी होचे ये विषय आम निज मन को पचार दरकार टू करेक्ट ऑल दिस मीडिया वॉचडॉग्स लाइक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एमानकर एक प्रमुख भूमिका रही दे आर द वॉचडॉग्स आज आम पब्लिक डिस्कोर्स एत निम्नगामी होजे निज टेलीविजन चैनल ने डिबेट नारे घृणा विद्वेष एवं डिविजन एलिमेंट मान सृष्टि करथिबा किछि स्टार एंकर मान को माननीय सुप्रीम कोर्ट कड़ा शब्द रे निंदा करछथि दैट इज द ट्रुथ केबे भारत इतिहास रे हेइ नथिला The Supreme Court has come down heavily against those prime time star anchors, the so-called star anchors, जो मानकर behavior ए देश रे विषमंजी बुणिबा को त्वरान्वित करुछि of all the institutions in this country Supreme Court कड़ा भाव में शब्द ने निंदा कर किंतु प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया एगुड़ी क्वाजाई जुडिशियल फंक्शनरीज एंड दे आर द माने क्रीचर ऑफ द लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट रो लेजिस्लेशन द्वारा 60 दशक रे जन्म होइछि किंतु क्वाजाई जुडिशियल बॉडी प्रेस काउंसिल ए दिगरे मुखर हवार कार्यसूचना देखि पारने सहित विग्रह It should be more assertive to curb fake news and hateful discourse aimed at creating division in the society. आज कहा मन में तिले मात्र संदेह रहिबा उचित नुहे जे Indian press is under severe pressure. There are whispers that nowadays instructions come from WhatsApp groups. What should be the discussion point? What topics are to be discussed in the prime time? How it is to be discussed? Whom to invite as guests? Etc. I again say these are rumors, but as they say, there is no fire without smoke. मैं तो सत्य न भावी पाए, किंतु आधे किसी न किसी धुआं बाहर उठी, जा यहाँ नथिले हबनी। आज जितने एरोप्लेन में सरकार का प्रचार प्रसार करा जाउची, आज जितने सर्विंग आर्म फोर्सेस जवान को सरकार का प्रचार प्रसार में नियोजित करा जाउची, मीडिया ए सब दूरे रही सरकार को प्रश्न पचारिबा उचित। जेतबेले भी कहता शासक को प्रश्न पचार सुजोग मिल पचारे आप आंब काटिकी खाते ना चुषी खाती आप दिन को एत कम कर हालिया कहीं होना कि किसी टर्निंग नौ कि आप टूर गला बेले पकेट में पर्स रखुंट कि ये कठिन परिश्रम बदल में ये क्वेश्चन पचार ये देशर हजार हजार मेहनती मनीष गरीब गुरुबा चाषी मुलिया मेहनती खटिया लोकर प्रकृत समस्या को डिस्कसन आउटसाइड आम्बिट को आनबार गोटे मेकानिजम तेणु लोकर समस्या बहुत अच्छी से प्रश्न पचारतु आमको पचारू से सब पचारे आम परी राजनीतिक व्यक्ति कि संविधान प्रति संसद प्रति सर्वोपरि लोक प्रति आम उत्तरदायी हूँ अन्यथा सोशल मीडिया जुग social media will take over the mainstream media space. It is time to reflect upon ourselves, make course correction in the needed, and serve the people of India as expected of the press. मु पुणी थरे समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि को जातीय प्रेस दिवस रे हार्दिक शुभेच्छा जनाई मोर वक्तव्य सांग करुच्ची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।